یہ حکومت کس کی تھی؟ مسٹر عمران خان گورنمنٹ سر. ہم بھی جانتے ہیں ایف آئی آرز کیسی ہوتی ہیں. کیس ہی ختم ہو گیا. نہیں, واٹ از دا نیچر آف دی سر؟ یہ پوچھ لینا, پوری ایف آئی آر آپ کے پیچھے کھڑی ہے نا. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین کرام, پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جو بلاک کے اندر کچھ پروگرام کیے جس میں انہوں نے کچھ ریاستی اداروں اور عہدیدار اور ان کے بارے میں کچھ this is what you're referring to? My lord, I'm referring to CMA 24. نہیں, یہ جو ابھی فائل کر رہے ہیں آپ, نہیں وہ تو 2490 ہے. یہ نمبرز اس میں نہیں. یہ 2488 2490 2488 take up 2488 یہ 2488 and if you may kindly turn to page 11. نہیں, یہ دیکھیے ہم سیدھی سادہ آپ سے بات کر رہے ہیں. ہم بھی جانتے ہیں ایف آئی آرز کیسی ہوتی ہیں. کوئی سبسٹینشیل اوفینس ہے یا بس ایسی تنگ کرنے والا اوفینس ہے؟ My lord, in all fairness, But you're not responsible. Why are you so hesitant? نہیں I'm not. یہ کہہ رہا ہوں کہ It was a different age, it was a different government, but people don't remember history. They want only today. They don't want to remember yesterday, and they don't want to plan for the future. ایسا کچھ ہے نہیں اس کے اندر جس کو یہ کہا جائے کہ سیکشن 11 ہو سکتا ہے 13 and 20 کے جو offense آپ پوچھ لیں ایف آئی سے. آر انٹرسٹیڈ ان پرسوئنگ دس؟ 3 سال تو گزار لیے, 21 22 23 24. My lord, or you can keep it pending to pull his chain whenever you want to. No. If that's your objective. No, it can't be. It can't be or it isn't. It isn't and it can't be. It can't be, I can say, but for you. It isn't either, sir. Ji? It isn't either. Now that because the challan is before the trial court, if he moves an application or He won't move anything. I'm asking the state. Ji. Is it a criminal offense Mr. Imran Shafkat has committed? I'm not asking Mr. Imran Shafkat. I'm asking the state. My lord, in my opinion, no. So, is the FIA withdrawing the case? My lord, FIA at the moment now because they have They come under you. They'll move an application before the trial court. सलाउद्दीन साहब, आपने पिटीशन फाइल की और केस ही खत्म हो गया. अभी तो आज ही बचा लेता मैं भाई. She's very kind. Such quick relief, very few people get. But what I'll be requesting for the main petitioner in my case is, sir, that the parameters of FIA's jurisdiction. Yeah, we are actually that's where we wanted to go to. Yeah. So okay, so can we go to there? And who's this lady standing next to you? नहीं, आपके साथ हैं? No, I believe she has her own petition. अच्छा. Who is she? So may I? I'm a journalist based in Karachi. I filed a petition on the 14th of February. What do you want? It's related to the JIT, the FIA notices, coercive action by the FIA. Okay. Then you are well represented by Mr. Salahuddin Ahmed. If I may, I'm appearing in person. My petition is pending before the committee. It was filed on the 14th of February. Are you saying anything different to I what? am. Can you just wait a second? Yes. At least hear the question. Is it he's advocating the same thing, Mr. Salahuddin Ahmed? So you don't think he was able to do so? No, he is very able. No, what? At any new point, let us hear him. Yes. And if there is some point which is he has left out, you can tell us, because he's a senior lawyer of the court. He will be able to assist us better. Yes, if I may, after him, please. Okay. Thank you. Don't repeat anything if there is something new to be added. Yes. To the extent of SMC 5, there was another journalist against whom an FIR was registered, Mr. Amir Mir. I have the same statement which I have made in relation to Mr. Imran Shafkat with respect to his FIR also. We'll record your statement. My lord. And FIA will move an appropriate application in whatever that case they do, we are recording your statement in presence of the FIA. My lord. Okay. My lord, as far would you? Because you know I don't interfere in other people's work, because we are recording your statement. Ji. Would your lordship like to take up the FIA issue first, or the issue of the police reports regarding Matiullah Jan and Afsan Alam? We are more concerned with the legal issue, because each individual case we will spend a lot of time on it. But if you want to do it that way, it's up to you. But I thought it's better to
go the legal route first. Okay, sir. Let's start with the constitution, the law, the subordinate legislation. ठीक है उसमें योर लॉर्डशिप विल रिकॉल पुलिस से रिपोर्ट मंगवाई गई थी और FIA से, एंड योर लॉर्डशिप हैड आस्क्ड मी टू सी इफ दोज रिपोर्टर्स वर जर्नलिस्ट वर वांटेड टू बी represented. I am currently representing Mr. Absar Alam, Mr. Matiullah Jan and Mr. Imran Shafkat. In Mr. Matiullah Jan and Mr. Absar Alam's cases are quite similar in as much as one was kidnapped, the other was shot, and the police investigation is in question. The other case of Imran Shafkat, that is a case of the FIA registering an FIR against him. So that basically ties into... No, what is the allegation there? My lord, I have to, right now, I don't have his complete case record with me. I've not been able to get it. I talked to him day before yesterday, and his case record has not come available. No, but you would know the nature of the FIR. What is it alleged? Sir, वो पीका के offenses थे, sir. When was this? Recently, old. This FIR was registered on 7th of August 2021. Regarding? My lord, certain offences were alleged under PICA and Penal Code. Mr. Imran ये हुकूमत किसकी थी? It was it was Mr. Imran Khan's government, sir. अच्छा, okay. And so he runs his program on No, YouTube. is it case pending against him? It's closed. Sir, What is it? in this case, challan has been filed before the trial court. नादरीन कराम, आपने वीडियो देखी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब काजी फाइज ईसा साहब और अटारनी जनरल के दरमियान दिलचस्प किस्म की गुफ्तगू के दौरान पूछा गया कि ये जो केस चल रहा है इसके जब मुआरकात या मामला जब हुआ तो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर कौन थे। तो अटारनी जनरल ने बताया कि उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान अहमद ख़ान न्याजी थे। नाम सुनते ही अदालत में एक अजीब सी कशमकश होगी, ऊपर से खातून आती हैं और ख़ातून के साथ फिर बहस होती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की, और बहस के दौरान आपने देखा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि आप 1 मिनट ठहर जाइए, पहले मुझे बात मुकम्मल करने दीजिए। तो अभी इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के अंदर, एक और मामला खड़ा हुआ है कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून रहनुमा, उन्होंने कहा है कि हमारे केसेस से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को दूर रहना चाहिए, चूँकि उनके हालिया फैसलों की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसों से दूर रहें ताकि किसी तरह का कोई सवाल ना उठ सके। ऑलरेडी उन पर इतने सवालात उठ चुके हैं उनकी, अगर वो किसी केस में बैठेंगे तो उनकी जो फैसला देंगे उनका फैसला जो एक सवालिया निशान होगा उनके फैसलों पर बहुत ज़्यादा। तो लिहाजा उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसों से दूर रहना चाहिए। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, ख़ास तौर पर IMF के से कर्ज़ा लेने के हवाले से, मुल्क के अंदर महंगाई के हवाले से, तमाम आवाम पूरी की पूरा मुल्क इस वक्त एक ही सोच लेकर चल रहा है कि पाकिस्तान में इकॉनमी की बेहतरी कब आएगी, आम आदमी को रिलीफ कब मिलेगा। रमज़ान का बबरकत महीना गुजर रहा है, इस महीने के अंदर भी यकीन मानिएगा ऐसी फैमिलीज़ भी हैं जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त तक के लिए रोटी दस्तयाब नहीं है, वो मजबूर हैं, वो हाथ भी नहीं फैला सकते, वो सफ़ेद पोश तबका है। तो खुदारा आपके इर्द गिर्द भी होंगे ऐसे सफ़ेद पोश लोग, जिस हद तक हो सके उनकी मदद कीजिए, आपका जहाँ तक हाथ पहुँच सके उनकी जाके मदद करें ताकि किसी को उसका एहसास या ख़बर तक न हो, उसकी इज़्ज़त भी मजरूह न हो। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।